some more things related with the cost escalations. Okay, so in a fast we will go through which things we have already covered in previous lectures. So we have already started the definition of cost escalations, the rise and fall of the uh, construction cost due to various consequences. There may be various things which is to be covered in cost escalations. Okay, these are definitions we have seen, general inflations we have seen, global market forces or inflations we have seen, global market changes due to what is the cost escalations, effect of cost escalations on the global market we have seen, skilled labors we have seen already, and we have gone through the increased demand in some seasons or some areas there is increase in demand. So we have already gone through. You know? In today's lectures, we will have the fifth concept of escalation in cost. So this concept it is to be taken care in today's lectures. Okay. So material fabrication supply. Builders and subcontractors were not the only ones who had particular challenges caused by the recessions. So there will be a vast change will be there. That is consequences caused due to the materials or due to the labor cost or the material cost. So here the builders and subcontractors are not the only sufferers. Okay, no? So there various firms or various directly which are in contact with the construction work, they are the sufferers of the rise and fall in the market rates of the material as well as the labors or the tools and plants required. ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, builders and subcontractors were not the only ones who had the particular challenges caused by the recessions. ठीक है ना? So there may be ups and downs in the cost of the materials, there may be ups and downs in the inflations or the changes in the cost of construction materials, labors में हो सकते हैं, but these two are the members, they are not only the sufferers. Many things, many that is directly connected with the construction of work, they are the sufferers for the recessions. Okay, again suppliers felt the pain as well. Many had to lay off the works because suppliers also it has been directly affected with the recessions. Okay, nowadays suppliers, various suppliers such as cement, steel, fine aggregates or coarse aggregates, so they also suffers with the recessions. Okay, so recession it has been caused, so therefore suppliers are also affected by these recessions, and in some cases they can leave the work. Okay, lay off workers. Many had to lay off workers at ongoing works. They leave the work with incomplete work due to the availabilities of the materials. Okay? Again, number C is nothing but like many contractors, suppliers, and fabricators reduce their own output capacity in order to cut cost. Okay? So the outturn of the contractor, the outturn of the suppliers or the outturn of the fabricators, ठीक है ना, जो उसने मतलब कोट किया था टेंडर्स में बोलो या फिर while executing the work, so they will reduce their output. They will reduce the output because the due to the recession period or due to the limited that is availabilities of the cost required, therefore they will reduce their output. Output capacity क्या हो जाएंगी उनकी reduce हो जाएंगी because the amount paid is less by the that is owners, or ना government say या फिर owners say, the amount given by them is less, so therefore the output will be also less. Again, output capacity will be reduced by the contractors, suppliers, and fabricators. Again, number fourth point is D point is now with the current uh, resurgence in the construction volume combined with the reduced number of suppliers in the market as a result of failures, the demand is in excess of the capacity in some cases. है ना? As many of the laborers or many of the contractors or many of the firms, they are ongoing work से कैसा होता है, half incomplete work से they leave the work. ठीक है, due to limited availabilities of the resources बोल सकते हैं या फिर cost available it is limited due to that, they will leave the that is the ongoing work. ठीक है, जो भी ongoing work था तो half completed work they will leave, and due to which excess demands will be there in some cases. जिससे क्या होगा कि दूसरी तरफ में डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि many of the laborers will be left, they will leave their original place of constructions, and due to which the demand will be in excess in other way. ठीक है.
इसकी वजह से दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ कैसा हो रहा है कि more numbers of laborers or more numbers of contractors or more number of suppliers, they are leaving their original field of construction, जो भी था पहले जहाँ पे काम कर रहे थे, अब क्या हो गया कि ड्यू टू रिसेशंस दे विल लीव द पर्टिकुलर फॉर्म एंड दे विल ज्वाइन द डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना। तो जब जहाँ पे दूसरी तरफ ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, देयर विल बी मोर कॉम्पिटिशन. This as a result of demand excess supply leads to uh, inevitable price increase, ठीक है ना. तो there will be more hike in the prices due to the results in the demand, excess demand हो जाएगा दूसरी तरफ में, तो जिसकी वजह से there will be a considerable increase in the rates में जो भी rates रहेगा, whether rates for the laborers होगा या फिर rates for the materials होगा या फिर rates for the tools and plants और machineries होगा, तो there will be increase in the rates, ठीक है ना. तो ये due to this there will be increase in the rates, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉस्ट एस्केलेशंस में नेक्स्ट इज नथिंग बट द नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है. तो वेदर इवेंट्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सुपर स्टॉर्म सैंडी और द विंटर पोलर, मतलब अगर देयर विल बी सम नेचुरल डिजास्टर्स ना, नेचुरल दैट इज कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर्स हैवी रेन्स के वजह से बोल सकते हैं, या फिर स्टॉर्म्स के वजह से, या फिर ड्यू टू वेरियस दैट इज अनफॉर्चुनेट एटमॉस्फेरिक एक्शंस, ठीक है ना. अनफॉर्चुनेट एटमॉस्फेरिक एक्शंस की वजह से देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग ड्रिव, मतलब देयर इज चेंज इन द एस्केलेशंस, ठीक है. अब जैसा हैवी रेन्स ना, द एग्जांपल इज फॉर हैवी रेन्स. अब हैवी रेन्स में क्या होगा कि कंटिन्यूअस हैवी रेन्स फॉर 5 to 6 days और 7 days और वीक, देयर विल बी लॉस इन कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है. The heavy loss in construction work will be there. Laborers जो थे वो empty, मतलब you have to give the amount उसका जो रहेगा लेबर्स का जो भी वो विदाउट एनी वर्क, वी हैव टू पे द वेजेस टू द लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स विदाउट एनी वर्क. तो दिस इन दिस वे देयर विल बी अ कॉस्ट एस्केलेशंस ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल डिजास्टर्स में ऑल्सो डिले कंप्लीशंस, यस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यू टू हैवी रेन्स, जैसे एग्जांपल था हैवी रेन्स बोलो या फिर वेरियस नेचुरल देयर इज डिजास्टर्स की वजह से देयर विल बी डिले इन द कंप्लीशन वर्क, ठीक है ना. स्टार्ट भी होने को टाइम हो सकता है या फिर कंप्लीशन होने को भी टाइम हो सकता है, ठीक है. कोई चीज़ आज जैसा स्टार्ट होनी थी बट आफ्टर अ वीक और आफ्टर 15 days इट हैज़ बीन स्टार्टेड, तो स्टार्ट लेट हो रहा है तो एंड भी क्या होगा उसका, देयर विल बी कंप्लीशन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड एंड एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विल बी, सपोज द 6 months में कंप्लीट होना था, इट विल रिक्वायर 7 months और 8 months ड्यू टू दिस नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है. तो स्टार्ट एंड एंड डेट्स of a project which increases the potential for the cost escalations by drawing out the overall schedule. जिसके वजह से क्या होगा कि ड्यू टू दिस नेचुरल डिजास्टर्स देयर विल बी कॉस्ट एस्केलेशंस, चेंज इन द कॉस्ट, जिसकी वजह से डायरेक्टली अफेक्टेड ऑन द cost escalations. Next is safety code or that is project certifications and requirements during estimations. We have to follow the safety things, safety codes to be followed, safety that is the building codes to be followed while execution of any project. अब जैसा है कि बहुत से साइट्स पे in a precise way if more norms more that is the safety norms it has been considered, तो जिसके वजह से क्या होगा कि changes in the building codes, internal or external changes in the safety requirements and the project certifications requirements can lead to cost escalations, ठीक है. तो जितना ज़्यादा मतलब प्रिसाइज वे में कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, दिस विल अफेक्ट द कॉस्ट एस्केलेशंस. If we are fulfilling the norms of the safety codes, if we are fulfilling the certifications or safety norms, agar we are fulfilling the safety norms, so this will result in the cost escalations. This will result in the cost escalations while following the safety norms, okay. Any lack of awareness in these areas can cause unanticipated costs, which will likely land squarely on the contractor's balance sheet, ठीक है. अगर on the other hand एक तरफ तो we have to follow the safety norms, another thing other that is उसका जो background रहेगा, if we are not following the safety laws, safety things, अगर certifications या बोलो safety that is while execution of work, सेफ्टी नॉर्म्स इट हैज नॉट बीन फॉलोड, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि अदर वे में क्या होगा, इफ एक्सीडेंट्स इट हैज बीन कॉस्ट, ठीक है ना. कंस्ट्रक्शन में एक्सीडेंट्स अगर होते हैं या फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंट्स या फिर लेबर्स को देयर इज एनी इंजरीज टू द लेबर्स, तो एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी अगेन रिक्वायर्ड. अगर उसको हॉस्पिटलिटी होगा या फिर वी हैव टू मतलब एक लार्जर और मेजर कोई अगर इंजरी होती है तो वी हैव टू पे सम अमाउंट, ठीक है.
तो दिस विल रिजल्ट्स इन द कॉस्ट एस्केलेशंस. ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि सेफ्टी नॉर्म्स अगर फुलफिल नहीं होते तो अदर हैंड एंड पे अगर इफ देर इज एनी इंजरी टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स बोलो कॉन्ट्रैक्टर्स बोलो तो एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड. So this will again results in the cost escalations. Okay? And these are the circumstances on which there will be change in the construction of cost. Cost escalation क्या है? There is a rise and fall of the cost. So we are studying with the consequences on which there will be change in the construction cost. Construction cost कौन से consequences से change हो रहा है जैसा labor से हो रहा है जैसा natural disasters से change हो रहा है safety codes अगर follow करते हैं नहीं करते उससे changes हो रहा है. तो these are the various parameters on which there will be cost escalations. ये सारे जो parameters है we are studying in cost escalations. ठीक है. अगेन नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन. अब एक तो रिलेटेड कॉस्ट था, नेक्स्ट इज टाइम. ठीक है ना, टाइम से रिलेटेड बिकॉज एस्केलेशन इन कॉस्ट एंड टाइम था. तो हियर वी विल स्टडी अबाउट द टाइम. यहाँ से अब कैसा होगा, वी विल स्टडी अबाउट द टाइम. ठीक है ना. तो टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स. Most construction contractors set a date by which the works described in the contract must be completed. So some date and some deadlines or some specific stipulated time it has been fixed for the completion of the project. But this is not the date by which all obligations under the contract has to be discharged, but the date by which the practical completion must be certified. दैट मीन्स दिस इज जस्ट द डेट ऑफ कंप्लीशंस. बट यहाँ पे आपका काम कंप्लीट नहीं होगा. डॉक्यूमेंट्री वर्क्स एंड अदर रिलेटेड वर्क्स विल बी ऑन गोइंग आफ्टर, मतलब कंप्लीशन होने के बाद भी ऐसे कुछ काम रहेंगे दैट इज टू बी कंप्लीटेड आफ्टर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क. ठीक है ना. दैट डॉक्यूमेंट्री वर्क बोलो या फिर बिलिंग पार्ट बोलो या फिर रिलेटेड विद द वेरियस एक्टिविटीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भी वी हैव टू कंप्लीट सम पेंडिंग वर्क्स रिलेटेड विद अकाउंट्स बोलो, रिलेटेड विद द बिल्स बोलो, रिलेटेड विद द एस्टिमेशंस बोलो, है ना. तो ये सारा काम बाद में भी होगा, मस्ट बी सर्टिफाइड. दैट इज द डेट बाय विच द वर्क्स हैज बीन कंप्लीटेड एंड द क्लाइंट कैन टेक पोजीशन ऑफ द साइट. ठीक है ना. ये कैसा है कि टाइम कंप्लीशन क्या होगा, it is nothing but the date at which the work has been completed and the client can take position of the site. मतलब अब काम खत्म हो गया and hand over हो रहा है पूरा काम. So here this is nothing but the time of completion. At the time we are handing over the complete site to the client, जिससे हमने मतलब सामने वाले जो रहेगा उसको वो पूरी साइट क्या हैंड ओवर हो रही है. ठीक है. So this is nothing but the time of completions. The defects liability period, sometimes called as the rectifications period, typically lasts 6 to 12 months, during which the client may occupy the premises and the contractors must rectify any defect that are identified. ये बहुत important term है. That is D term is very very important. This will also be studied in the estimating and costing में भी आप पढ़ेंगे. Defect liability period. What is this actually defect liability period? After execution or after complete construction of work, there is some stipulated time is fixed, that is for 6 months or 12, मतलब half an year or a complete 1 year. तो ये पीरियड तक अगर इफ देर इज एनी मतलब मेंटेनेंस वर्क होता है या फिर ऐसा कुछ लीकेजेस होता है या फिर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में दैट इज कोई भी ऐसा मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में चेंजेस होते हैं, तो दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ माइनर चेंजेस अगर कुछ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टरिंग में बोलो या फिर उसका पाइपलाइंस में फिटिंग्स में बोलो या फिर ड्रेनेज लाइंस में इफ देर इज एनी लीकेज बोलो, तो हियर वी हैव टू रेक्टिफाई दिस रेक्टिफिकेशन. इसको दूसरा नाम क्या दिया, देयर इज द रेक्टिफिकेशन पीरियड. ठीक है ना. डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड इज आल्सो कॉल्ड एज द रेक्टिफिकेशन पीरियड. तो इन दिस रेक्टिफिकेशन पीरियड वी हैव टू द कॉन्ट्रैक्टर शुड बियर द कॉस्ट. उसमें जो भी चेंजेस होगा तो जो भी रेक्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा दैट अमाउंट विल बी बियर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. कौन बियर करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर, बिकॉज उसके एग्रीमेंट में और उसके टेंडर्स में और उसका मतलब वाइल एग्जीक्यूटिंग वर्क जो उसने स्टार्टिंग में किया था टेंडर्स में, तो ये सारा स्टेटमेंट गिवन था. ठीक है ना. तो वो पीरियड में वी हैव टू गिव दिस. तो वेट अ मिनट, देयर इज अ कॉल.
तो यार दिस इज नथिंग बट द डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड. ये क्या था? डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड था कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी 6 to 12 मंथ्स के लिए. दिस पीरियड इट हैज बीन टेकन केयर फॉर. मतलब उसमें अगर कुछ भी होता है, मेंटेनेंस के काम होते हैं, दैट विल बी बियर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स. ठीक है. तो यार this is nothing but the defect liability period. Documentations that should be issued to the client on certifications of the practical completions may include after completion of any work. These are the documentary works or these documents. It is to be handed to the client. ड्राफ्ट बिल्डर्स ओनर्स मैनुअल. ड्राफ्ट रहेगा जिसमें बिल्डर्स का ओनर्स का मैनुअल रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट इज द बिल्डिंग यूजर्स गाइड, हेल्थ एंड सेफ्टी फाइल एंड बिल्डिंग लॉग बुक will be theirs and a construction stage report. ठीक है ना. कंस्ट्रक्शन में वेरियस स्टेजेस में जैसे जैसा कंस्ट्रक्शन हुआ था एट वेरियस स्टेजेस रिपोर्ट इट विल बी ड्राफ्टेड. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री फाइल इट विल ऑल्सो बी हैंडेड ओवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है ना. कंप्लीशन होने के बाद में क्या होगा कि ये सारा फाइल्स इट विल बी हैंडेड ओवर. इसमें बिल्डिंग ओनर मैनुअल रहेगा, बिल्डिंग यूजर्स गाइड रहेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी फाइल रहेगा और बिल्डिंग लॉग बुक रहेगा. Building logbook and construction stage report will also be there. So in this way, these things we have covered in the cost escalations. ये सारा काम काय में किया था? We have seen under the cost escalations. Next, again there will be some bits related with the cost escalations. So here actually ये cost escalations का starting जो था वो triple P वाला concept है, but actually yes, cost escalations. So we have already seen this definitions, increase and decrease of cost escalations. Next, we will see the causes of cost escalations. What are the different causes of cost escalations? ठीक है. ये सारा समझ में आ रहा है? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, उसी sir. से yes. So we will see some more bits related with cost escalation. अब यहाँ पे कैसा हुआ है कि next we will see about the causes of cost escalations. ठीक है ना. Why there is increase or decrease in the construction of cost. कोई भी काम में increase or decrease क्यों हो रहा है? तो we will see the causes of cost escalations. ठीक है ना. So here first more cause of the cost escalation is nothing but the management. ठीक है ना. Cost escalations मतलब rise and fall of the material cost हो सकता है, rise and fall of the equipment cost हो सकता है, rise and fall of the labor cost हो सकता है. तो there may be a rise and fall of the various things, rise and fall of the overall construction cost. ठीक है ना. उसके various causes हो सकते हैं. So we will see one by one what are the different causes of cost escalations. So number one is the management. Due to the management, poor cost management is an underlying cause of the cost escalations. ठीक है ना. Management word, because we are dealing with the construction management and law, so management plays an important role in order to reduce or in order to avoid the that is the consequences caused in the construction of work related with the cost. ठीक है ना. जो भी consequences caused हो रहे हैं या फिर जो भी while construction of any project में related with cost अगर कोई ऐसे चीजें हो रहे हैं तो this management plays an important role. ठीक है ना. Proper management should be there in order to reduce the cost escalations. ठीक है ना. cost escalations को reduce करने के लिए management plays an important role. ठीक है. तो poor management अगर होगा तो there will be more cost escalations. So number next point is related with it is related with the cost estimates based on the incomplete or inaccurate informations may lead to the cost escalation during a project or the production run. अब क्या होता है कोई काम अगर अपन इनकम्प्लीट किया, ठीक है ना, कॉस्ट एस्टिमेट किया मगर इनकम्प्लीट वर्क था, तो इनकम्प्लीट से भी क्या होगा, इनकम्प्लीट अगर इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से, तो दिस विल रिजल्ट इन द कॉस्ट एस्केलेशंस. कोई भी काम अगर इनकम्प्लीट है, अधूरा नॉलेज है, अधूरा मतलब वी हैव इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से, तो इनकम्प्लीट थिंग्स विल रिजल्ट्स इन द कॉस्ट एस्केलेशंस. ठीक है. तो वी शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क. वी हैव टू वी शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एग्जीक्यूशन और वेरियस एक्टिविटीज विच हैज बीन कैरिड आउट. तो उसका कंप्लीट नॉलेज होना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना. इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ थिंग्स मालूम हो गए, कुछ नहीं मालूम हो गए, तो दिस विल रिजल्ट इन द कॉस्ट एस्केलेशंस. ठीक है ना. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. नंबर सेकंड पॉइंट रिलेटेड विद द मैनेजमेंट क्या होगा, कंपनीज ऑल्सो रिस्क कॉस्ट एस्केलेशंस इफ दे डू नॉट मॉनिटर कॉस्ट that is continuously to ensure that they remain in the line with the original estimate. Yes.
अब कैसा होता है कि कंपनीज, मैंने कैसे कितना अमाउंट कोट किया था और मेरा जो एग्रीमेंट्स था और जो वेरियस स्टेजेस था वो प्रॉपर ऑन टाइम हो रहे हैं क्या, तो रिमेन इन लाइन. तो ऑलवेज वी हैव टू सी वेदर वी आर आवर कंस्ट्रक्शन वर्क इज, इट इज कंप्लीटिंग विद इन द स्टेबुलेटेड टाइम और विद इन द कॉस्ट जो मैंने प्रिस्क्राइब किया था, ये प्रॉपर फ्लो में और प्रॉपर लाइन में और प्रॉपर वे में, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिंग और नॉट, वेदर इट इज इन ऑन, इट इज प्रॉपर, मतलब ongoing में है, या फिर is there any changes in the construction of work. तो at every stage we have, we should have in touch with the proper, that is line and length. ठीक है. तो companies also risk cost escalation if they do not monitor costs continuously to ensure that they remain in line with the original estimate. Yes, तो we should in line with the original estimate. जो मैंने कोड किया था उसके बाहर में, उसके लिमिट्स के बाहर में अपने कंस्ट्रक्शन, we should not execute or construct the work beyond the estimate. ठीक है ना, बियॉन्ड द एस्टिमेट नहीं करना है. ठीक है. तो ऑलवेज कीप इन, वी शुड एग्जीक्यूट द वर्क विद इन द लिमिट्स, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स. ठीक है. Number 3 point related with the cost escalation is failure to include cost escalations clauses in a contract with a suppliers leaves a company vulnerable to unforeseen cost increases during the period of the contract. ठीक है. तो अब कैसा है कि unforeseen expenses, तो this unforeseen expenses, if we are not in touch with the unforeseen expenses, if extra amount required for unforeseen expenses, ठीक है, so here we should always, that is there, we should not leave a company vulnerable to unforeseen expenses. मतलब कैसा है कि अगर कोई ऐसे expenses bear करना है during execution of work, तो we should accept that unforeseen expenses. We should not leave the incomplete work. ठीक है ना. तो अगर कुछ ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है कहीं पे अनफोर्सिन एक्सपेंसेस की वजह से, तो वी शुड बियर दैट अमाउंट. ठीक है ना. वी शुड बियर दैट अमाउंट एंड दिस अनफोर्सिन एक्सपेंसेस शुड बी बियर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स. मटेरियल से रिलेटेड भी होगा. मटेरियल अगर मतलब देर इज चेंज इन द मटेरियल कॉस्ट बोलो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन और ड्यू टू एनी मटेरियल से रिलेटेड जो पार्ट होगा, दिस विल रिजल्ट ऑल्सो रिजल्ट इन द कॉस्ट एस्केलेशन. ठीक है ना. तो मटेरियल्स पहले मैनेजमेंट था, नंबर 1 वाज मैनेजमेंट, नंबर 2 इज मटेरियल्स. ठीक है ना. तो मटेरियल से रिलेटेड भी कॉस्ट एस्केलेशन होगा. अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द cost escalations. Raw materials use cement, sand, aggregates, fine aggregates, coarse aggregates होगा, स्टील होगा. इससे रिलेटेड जो मटेरियल्स रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन बोलो, प्रोडक्शन बोलो, तो रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशंस और रिलेटेड विद मतलब कितने अमाउंट में अवेलेबल है, ऑल दिस विल रिजल्ट इन द कॉस्ट एस्केलेशन. ठीक है. रॉ मटेरियल कॉस्ट कैन राइज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई. जैसे एग्जांपल दिया था मैंने फाइन एग्रीगेट्स का, रेनी सीजन का, सीमेंट का भी देयर इज एन एग्जांपल इन रेनी सीजन. तो हियर डिमांड ऑफ द सम मटेरियल इट विल बी मोर एंड अवेलेबिलिटी विल बी लेस इन सम सीजन्स. ठीक है ना. डिमांड मोर है बट अवेलेबिलिटी लेस है, तो उससे क्या होगा, अमाउंट विल इंक्रीज. अमाउंट विल बी इंक्रीज ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल्स, रॉ मटेरियल. Raw materials such as coal, natural gas may be in a short supply because of the production of the or extraction problem. ठीक है ना. ये एक एग्जांपल दिया कि एक्सट्रैक्शन अगर कम होता है तो कोल का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, नेचुरल गैस का भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू लेस एक्सट्रैक्शंस. ठीक है ना. क्योंकि वी आर एक्सट्रैक्टिंग दिस कोल फ्रॉम द कोल माइंस में एक्सट्रैक्ट होते हैं और नेचुरल गैस भी एक्सट्रैक्ट होता है. तो हियर अवेलेबिलिटी या कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इट विल बी मोर. नेचुरल डिजास्टर से भी हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज से भी हो सकता है, जैसे रेनी सीजन है, इसकी वजह से भी देयर विल बी हाइक इन द मटेरियल कॉस्ट. राइजिंग डिमांड अभी एग्जांपल दिया, और सम स्केर्स रॉ मटेरियल सच एज प्रेशियस मेटल्स. अगर कुछ ऐसे है प्रेशियस मेटल्स है और एक्सपेंसिव मेटल्स है, तो दिस विल अगेन रिजल्ट्स इन द कॉस्ट एस्केलेशन ऑफ द मटेरियल्स. Labors are also important, that is manpowers required for any executing work. Without labors we cannot execute any work. The labors plays an important role. Labor costs have a significant impact on the construction of this. So labor cost also plays an important role. Impact on the manufacturing costs, particularly in companies where the production is labor intensive. That means लेबर ओरिएंटेड वर्क जहाँ पे होगा, तो दिस लेबर कॉस्ट विल अफेक्ट द कॉस्ट एस्केलेशंस. जैसा अगर कोई कंपनी है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन फर्म है, द टोटली बेस्ड ऑन लेबर्स,
but there is availability of labors, अगर less available labors are there, कोई लोकेलिटी में, कोई मतलब रूरल एरियाज में या फिर अर्बन एरियाज में, if there is limited availabilities of labors are limited, तो अब this will results in the cost escalations, ठीक है, this will results in the cost escalations, ठीक है. तो फॉलिंग प्रोडक्टिविटीज ऑल्सो क्रिएट्स अ कॉस्ट एस्केलेशन, ऑल्दो लेबर कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. अगर कोई प्रोडक्शन अगर लेस होता है, अगर उसका लेबर कॉस्ट सेम है बट प्रोडक्शन लेस हो रहा है, तो वी हैव टू पे मोर टू द लेबर्स. काम कम हो रहा है बट लेबर्स अपने मतलब फर्म में उतने ही है, बट काम आउटपुट कम, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क लेस है ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटीज बोलो या फिर नेचुरल वे में उसका आउटपुट कम हो रहा है. तो बट वी हैव टू, लेबर्स को तो पेमेंट देगा, तो दिस विल रिजल्ट इन द कॉस्ट एस्केलेशंस. दिस लेबर कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट. Compliance with the industry regulations can lead to the cost escalations. There will be several compliance to be followed, industrial regulations में. In manufacturing, for the examples, compliance with health safety, जैसे ये चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, रिलेटेड विथ हेल्थ, अगर कोई नॉर्म्स फॉलो हुए थे, सेफ्टी रेगुलेशंस एंड सेफ्टी हेल्थ के रिलेटेड नॉर्म्स अगर फॉलो होते हैं, तो अगेन दिस विल रिजल्ट इन द कॉस्ट एस्केलेशंस, ठीक है. तो इफ यू आर फुलफिलिंग द कोड्स, और इफ यू आर फुलफिलिंग द health related laws and clauses, so this will again results in the cost escalations, ठीक है. Compliance. Supply chain is also there. If that is supplying import and export, that is materials में अगर कोई supplying chain related activity हो रही है, तो this will results again in cost escalation. Changes in the supply chain can have an adverse effect on the cost. Rising labors or production cost in supply chain will also affect the cost of the finished product, ठीक है. तो सप्लाई चेन में मतलब इफ अवेलेबिलिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स इज लेस, एंड जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट था, जो भी मतलब जो मार्केट में अपन भेज रहे हैं, तो इफ इट इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज देयर, राइजिंग डिमांड इज देयर, दिस विल रिजल्ट अगेन इन द कॉस्ट एस्केलेशन, ठीक है ना. तो राइजिंग लेबर्स और प्रोडक्शन कॉस्ट इन द सप्लाई चेन विल ऑल्सो अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. Again, what are the different factors to reduce cost escalations? How we can reduce the cost escalations? Pehle, what are the causes of cost escalations? Next, these are the things, by considering this we can reduce the cost escalations. What are the factors to reduce cost escalations? ठीक है, कोई भी चीज एस्केलेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अब उसको reduce करना है, तो which things to be taken care while reducing the cost escalations? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट एस्केलेशंस कैसा reduce कर सकते हैं अपन, तो these things are very very important. Number one is pay a lot of attention to the project planning. Yes, the project planning plays an important role. Proper planning should be there, in order to, if proper planning is there, so this will result in the cost escalation. We can reduce the cost escalation by proper planning. Attention to be given for proper planning. So planning is the most essential component of the project management and the biggest weapon against the cost overruns and delays. कॉस्ट को ज़्यादा भी होने से बचाएगा और डिले होने से भी, टाइम स्टेपुलेटेड टाइम जो है ना डिले हो रहा है, और वी हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन अ स्टेपुलेटेड टाइम, इन द फिक्स टाइम, इन द फिक्स स्पैन ऑफ द टाइम. So this will proper management or proper planning will, it is nothing but the key, it has been given a most important aspect related with the overturns and delay of the project. Okay? Think of all the major scenarios and the flesh out the complete scope of the project before the single line is put. That means we have to overcome the, that is we have always, there should be a proper line and length should be maintained. Matlab always in a proper planning should be done in a proper way, so that it should be completed within the time limit. Okay? So think of all the major scenarios and the flesh out the complete scope of the work project. We have to always, what is the scope of our project, at what date we have to start, at what date we have to complete it. This thing, it has to be kept in mind in every stage of the construction of work. Then हर स्टेज में अपने को याद रखना है कि इन व्हाट इज द पीरियड फिक्स फॉर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लग रहे हैं, तो दिस इट इज टू बी केप्ट इन, ऑलवेज इट इज टू बी केप्ट इन माइंड. ठीक है ना, एक एक्टिविटी को कितना लग रहा है, और हाउ मेनी एक्टिविटीज दे आर बीन कैरिड आउट इन कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. है ना, कंप्लीट अगर कोई प्रोजेक्ट करना है, तो हाउ मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज विल बी कैरिड आउट. Once the scope is defined, get a sign off from all the stakeholders. ठीक है ना, एक बार अगर scope defined होता है, तो we can by the
प्रॉपर स्कोप जो डिफाइन किए थे, वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और अब इसके बाद कैसा है कि देर इज नो यूज ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। अब वंस द स्कोप इट हैज बीन डिफाइंड, तो वी कैन साइन ऑफ फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। हियर देर इज नो एज सच यूज ऑफ द स्टेक होल्डर्स। चेक अ वेंडर्स कैपेबिलिटीज बिफोर हायरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉस्ट एस्केलेशन को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले कैसा, नंबर वन वाज प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ टाइम, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कॉस्ट एंड एवरी स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, तो प्लानिंग था। नेक्स्ट इज द वेंडर्स, जिससे आपने काम लेना है तो वेंडर्स, तो we should hire a proper vendors, whether they are vendors or the whether the vendors in the sense contractors, simple way में contractors याद रखो। the we have to hire a contractors for particular type of work, whether they are capable to do a particular type of work in a stipulated time, वो capabilities है कि नहीं है, उसके अंदर skill, sufficient knowledge is there related with the particular type of work, so whether they are capable to do the particular type of work, it is very very important, ठीक है, in order to reduce the cost escalations, ठीक है। So in many complex projects, you might need to use the outside vendors to do a part of the project task. Vendors in the sense contractors, simple word में इसको contractors, construction point of view contractors याद रखो कि अपने काम के लिए को we have to hire some extra, that is specialized contractors, special मतलब skilled laborers will be required, है ना। Before you hire vendors, pay an attention to the following: find out their team capabilities and check if they matches your project requirements. उनके टीम के क्या कैपेबिलिटीज थे, उसके क्या आउटकम्स है, उसके कैसे मतलब if they are capable to do a particular type of project, उनका नॉलेज बिल्डिंग्स में, और वी आर एग्जीक्यूटिंग अ वर्क इन रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दे आर feasible to do a project work in the roads or not, तो उसके related with our project, if they are capable or not, we have to see, ठीक है ना, related with the project requirements। Improper skill sets match में can cause a significant drag in your project, मतलब अगर skills proper नहीं है, match नहीं हो रहे related with the project work, so this will result in the cost escalations, ठीक है ना। A significant drag in your project will be there related with time, related with the span of completions, so there will be a drastic change related with the time and cost, ठीक है। Number two is nothing but find out its if their costs estimate are realistic. तो उन्होंने जो कोड किया है द टेंडर्स में, जो भी कोड किया है, तो इफ देयर रियलिस्टिक है, प्रॉपर है, डिनाइन है नहीं है, रेट्स कोटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स, तो दिस विल बी चेक आउट। check how good as they are sticking to the deadlines in their previous project, मतलब जो deadlines उसने previous project में prescribe किया था, तो उसने proper deadline में if they are completed the project in the proper stipulated time or not, तो you have to see properly before giving the tenders or before accepting the tenders by the contractors। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट टू स्टे विद इन द स्कोप दैट वाज ओरिजिनली प्लान, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो भी प्लानिंग किए थे, जो भी मतलब प्रॉपर लाइन जो डिसाइड किए थे, जो स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड किए थे, तो वी हैव टू इन ट्यून विद द पर्टिकुलर स्कोप, ठीक है ना। जो भी स्कोप किए थे, आप जो भी डिफाइन किए थे, इन ट्यून होना है। वी शुड बी फेमिलियर विद द that is the goal which we have which we have to achieve in the construction of work। uh, I think scope creep is the biggest challenge for the project managers. So we have to that is always in touch with the scope which we have defined in the particular type of construction of work. Okay? The attempt to stay within the scope that was originally planned। यूज गुड शेड्यूलिंग टूल्स एंड चार्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू यूज प्रॉपर शेड्यूलिंग टूल्स एंड चार्ट्स, मतलब शेड्यूलिंग वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ को काम करना है तो प्रॉपर शेड्यूलिंग शुड बी देयर। व्हाट मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटीज कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, ये सारा जो रहेगा शेड्यूलिंग, प्रॉपर शेड्यूलिंग शुड बी देयर। प्रॉपर शेड्यूलिंग इज द मोस्ट इट इज मस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ड्यूरेशन टाइम, उसका कितना कॉस्ट रहेगा, पर्टिकुलर एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, एंड टाइम क्या रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारा शेड्यूलिंग इट इज टू बी डन विद अ प्रॉपर टूल्स टू बी मेंटेन, ठीक है ना। दिस प्लेज एंड दिस विल रिजल्ट्स इन अवॉइड दिस विल रिजल्ट्स टू अवॉइड द कॉस्ट एस्केलेशंस, ठीक है। तो improper scheduling can cause wrong cost estimations and increase the
आइडल टाइम फॉर द सम ऑफ द टीम मेंबर्स, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा रहेगा कि अगर मैंने प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं किया था तो एक एक्टिविटी तो बहुत फास्ट हो रही है, दूसरी एक्टिविटी इतना स्लो हो रही है कि द लेबर्स आर आइडियल इन द साइट, ठीक है ना। So this should not be there. ठीक है ना, proper planning should be there at every stage of construction of work, so that in every activity it should run simultaneously. Every activity should run simultaneously. ठीक है, कुछ ऐसा नहीं हो कि एक साइड पे इतना मतलब लेबर्स ऐसे हो कि एक एक्टिविटी में इतना ज़्यादा काम है और दूसरी एक्टिविटी में देर इज नो वर्क फॉर द लेबर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, एवरी एक्टिविटी देर शुड बी इन अ प्रॉपर शेड्यूलिंग, शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लेबर्स शुड बी देयर इन ऑर्डर टू execute the work in a proper manner, ठीक है। You could use a simple there is Gantt chart, or there are various tools required, or various project scheduling tools are there. So with the help of that tools we can have a proper planning of the drawing planning of the particular type of project, ठीक है ना। Proper planning with the help of various tools can be carried out. There are various tools in order to with the help of which we can properly done a scheduling for the particular type of project. Next is second last is nothing but the make sure the stakeholders in the project are on the same page. That means effective communications can help reduce the delay by avoiding workers working in the wrong things. So here we should in touch with the stakeholders also. Okay? So make sure the stakeholders in the projects are on the same page. That means at every stage of the work we should in touch with the stakeholders. That means in a wrong if we in order to avoid working in a wrong directions, ठीक है ना। So always in touch with the stakeholders, or the that is the senior staff members or the senior project members or the senior project managers in touch, so that we should the project work it should be in a right direction, ठीक है ना। वो proper directions में proper way में और proper construction work हो रहा नहीं हो रहा है, so that it should be completed within the time, ठीक है ना। As a project manager, it is your responsibilities to keep the communications among the team members work seamlessly. That means, project manager, the duty of the project manager is that the every worker or the worker बोलो या फिर engineer बोलो या फिर various जो manpowers थे, they should work there, or they should fulfill their responsibilities. ठीक है ना, they should not overcome their responsibilities. ठीक है, so every team member should fulfill or should obey their responsibilities, should fulfill their responsibilities in order to complete the project in the uh, time, prescribed time. Okay. Last is nothing but the in order to avoid the cost escalations, constantly track and measure the progress. Always there should be there is we should track constantly. We should have a keen watch on the various activities, and there should be a proper watch on the various activities which has been carried out. You can't improve what you don't measure. Yeah, that means you every time you should measure the work done. एवरी टाइम कैसा होगा कि हर काम एवरी एट द एंड ऑफ एवरी डे, जैसा आज खत्म हो रहा है, आज जैसा आफ्टर 6 o'clock, every day which work it is to be carried out and how much work it has been executed, आज का दिन में कितना काम करना था and at what stage we have completed that particular type of work. So there should be a measure of work. There should be a proper measure of work. जो मेजर नहीं होगा तो इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है ना। देयर शुड बी ऑलवेज इन टच विद द एट द एंड ऑफ अ डे हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वर्क इट हैज बीन कैरिड आउट। आज का मतलब एक्टिविटी में ये काम करना था, बट एट अ व्हाट एक्सटेंट वी हैव कंप्लीटेड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। If some work it has been remain, so next day we have to first we have to complete the remaining work, and next we have to again in touch with the remaining work, ठीक है ना। So our project manager has to constantly track the progress of the various tasks and various metrics to measure in the project, ठीक है ना। तो various tasks proper way में proper progress हो रहा नहीं हो रहा है, so all these things will be taken care by the project manager. Okay? This will provide early signals of the project delay, which also giving you opportunities to fix the issues before they boil over. ठीक है ना? That means before all the things it has been after मतलब काम कैसा है कि always in touch with the project. ठीक है ना? At the same stage we have to, if some activity it is taking a large amount of time. Okay? So that should be a rectifications, or there should be changes in its stipulated time. ठीक है ना? बाद में अगर मालूम हो रहा है कि दिस एक्टिविटी इट वाज टेकन लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी
वी हैव टू कंप्लीट इन विद इन, मतलब उसमें कम टाइम में करना है, तो ऐसा नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है ना। तो एवरी एक्टिविटी देयर इज सम फिक्स टाइम, so always there should be a proper that is tuning will be there, proper connections or proper in a proper directions we have to execute the work. So these are the various that is in order to avoid the escalation in cost and time. These are the things factors affecting, and with help of this we can avoid the cost escalations. We can avoid the cost escalations. Okay. So is that clear to everyone? Yes. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये अपन ने क्या किए थे, कॉस्ट एस्केलेशंस को अवॉइड करने के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है ना, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ये अगर करना है, ये थिंग्स कवर करेंगे, तो विद हेल्प ऑफ दिस थिंग्स वी कैन अवॉइड द कॉस्ट एस्केलेशन। ये 6 पॉइंट्स वी हैव कंसीडर्ड, ठीक है ना। लेबर से रिलेटेड था, मटेरियल से रिलेटेड था, मैनेजमेंट से रिलेटेड था, प्लानिंग से रिलेटेड था, है ना, शेड्यूलिंग से रिलेटेड था, ठीक है, और प्रॉपर स्कोप से रिलेटेड, है ना, प्रॉपर प्लानिंग, स्टेक होल्डर्स, ये सारा था। तो ये अगर पॉइंट्स कवर हो गए, ये दिस पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड, तो वी कैन अवॉइड द कॉस्ट एस्केलेशंस, वी कैन अवॉइड द कॉस्ट एस्केलेशंस, ठीक है ना। इंक्रीज इन द पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है ना, कैन बी अवॉइडेड बाय कंसिडरिंग दिस थिंग्स, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट्स वी हैव कंसिडर्ड। So here in today's lectures we have near about completed the cost escalations, ठीक है ना। cost escalation होता क्या है वो देखिए अपन ने। नेक्स्ट इसके we have seen the parameters of cost escalations, why cost escalation it has been caused वो देखे थे, और उसको अवॉइड करने के लिए which things to be considered, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसको अवॉइड करने के लिए in which directions we have to execute the work, in what should be the pattern of work। तो वी हैव सीन, है ना, कौन से डायरेक्शंस में काम मतलब हो रहा है, और कौन से डायरेक्शंस में काम करने की वजह से वी कैन अवॉइड द कॉस्ट एस्केलेशंस, ठीक है, बाय दिस थिंग्स टू बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉस्ट एस्केलेशंस, ठीक है। तो ये कॉस्ट एस्केलेशंस का टॉपिक वी हैव कवर्ड इन द टुडेज लेक्चर्स, ठीक है। तो एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिलेटेड विद द कॉस्ट एस्केलेशंस? यस। तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर, वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर्स रिलेटेड विद द कॉस्ट एस्केलेशंस, ठीक है। So give the attendance for this. Roll number 1 to 10. Roll 1 number, to sir, roll roll number number 2. 2, Roll number 3. 3, 7. 7, Roll number 6. 6. Roll Sir, number roll number 6. 10. Roll number 6. Roll number 10. Sir, roll number 10. 13. 11 to 20 में कौन है बताओ? 11 to 20. 15. Roll number 11. Sir, roll number 11, 12. Sir, 11. 17. 11, Sir, 11, 12, 13. 13 हो 87. गया. 15. 17, 13, sir. 15, 17, 20. 15, 17, 16. और कौन है? Sir, 20. 20. 21 to 30. Yes, sir. 21 to 30 कौन है बताओ? Sir, 22. 22, Sir, 23. 23, Sorry, 24. 24, 24 के बाद 22, 24, 31 to 40, 34. 34,